Now we Countdown हो are रहा है. अच्छा वी आर recording. लाइव. Not live, we are अरे recording. हाँ. अच्छा ओ हाँ, उतनी औकात नहीं चैतन्य है Okay, yeah, हमारी. we are स्टार्टर्स recording. स्टार्ट मतलब लास्ट वाला कब रिकॉर्ड हुआ था भाई? Yes. भाई 3 2 डेट and a हफ्ते डेट हो half गए. डेट weeks. हाँ 2 and a उतने में भाई half वो राम weeks. मंदिर बन रुको चुका है. रुको रुको, मैं डेट नहीं देखता याद हूँ. हुआ है, देखना पड़ेगा तेरे मैं देख रहा हूँ. मार्च 6 को, मार्च 5 को अपलोड हुआ था. ऑलमोस्ट 20 डेज. 20. 21 days को. dude, 3 हाँ, weeks 3 exact. Good. weeks हो गए. Let's begin. Oh, nice. We recorded on a Monday. Yeah, I don't have any context here. I have. हम लोग Yeah, फर्स्ट yeah, we'll एपिसोड give you ऑलरेडी context. रिकॉर्ड कॉन्टेक्स्ट है कर यार, हम चुके लोग थे बस रिया. बकचोदी कर जिस रहे दिन हैं. तुमको कॉल किए थे. हाँ, that's all. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, so Chaitanya is going Essentially. to give the intro. Give me an intro. We'll हाँ start. चल भाई इंटर्न काम Yes, कर. yes. Okay, welcome back to Techbro Panchayat. All the Tech Bros. Yeah, intern ही हूँ मैं. Okay, welcome back to Techbro Panchayat. We have new member of the Techbro Panchayat, Dhairya Shah, जो वेव कर रहे हैं चिट्ठी की तरह, पता नहीं क्यों. लाइव नहीं है भाई. Oh, live नहीं है. नहीं, it's ये recording मेरे Live only. को, नहीं. अरे वाह It's recording. I Anyway, knew that, bro. I'm a tech. and ब्रो. I'm a tech. Anyway, three familiar faces: Pandey, Saurav, and myself. So today we're gonna record episode 2, and yeah, let's take it off from there. We Yeah, haven't we don't started any have discussion any for today. playground, any topic set. We're just going to roll with the flow for Yep. next 1 hour. Let's Mm. see. Yeah, तो ये बताओ किसके बारे में क्या बुराई क्या करनी बातें है. कर सकते Let's go. Let's go. Oh, हैं. Not the name you took before. ब्रो देखो जो भड़ास है वो निकाल लो. ठीक है, जितना भाई पेंट अप फ्रस्ट्रेशन है निकाल लो. यूट्यूब भाई थेरेपी कर रहा है. 2 मिनट पहले हम यही कह रहे थे कि ये थेरेपी सेशन नहीं होना चाहिए. ये पब्लिक डिस्प्ले वाला थेरेपी हो रहा है. रूह अफ़ज़ा पी रहा है ना पांडे? Display therapy. हाँ भाई ब्रो ऑलवेज हेल्दी. या रोजे है. And bro, I'm also supporting like I'm supporting मतलब like भाई पानी वानी नहीं होता है ब्रो बहुत जगहों पे, तो I'm supporting that also. तो भाई I've changed the brand of cigarettes. I've changed it to Camel. Right. nice. तो थोड़ा सा वो भी है. ठीक है. जोक्स थोड़ा बात के लिए रखते, थोड़े ऑर्गेनिक जोक्स रखते हैं बाद में. But Organic फिलहाल jokes ये रखते forced- हैं बाद में. ये फोर्स जोक्स को थोड़ा साइड में रखते हुए. Yeah. We'll start. Chaitanya, what are the things you have been doing? हाँ, तो mostly everything that's running in my mind right now is Sex. कि open AI is doing a lot of work in building the next generation of artificial intelligence, and I feel it's a bunch of hypocrites trying to win a race that has not even yet begun, and I hate them for doing that. Uh, Essentially, my whole problem is you're training your models on data that people are giving to you, and your company is literally called OpenAI. Your model weights are behind closed doors, and you are selling it off to a company like Microsoft or whatever just because they invested $1 billion into you. I mean, fair motive, it's a capitalistic society, but you have a certain amount of responsibility towards everybody on the planet to make better use of this amazing piece of technology that you've stumbled upon. So, yeah, Dude, any thoughts? like the worst part is this: the art which is getting generated, like the pictures which are getting generated, is actually copies of original artists. Like there are signatures. Yeah. They are literally signatures. Okay. Oh, Yeah. So there are I did not signatures. know You that, know but this yeah. app which was created, creating different अरे that वो avatars of बूढ़ा your लोगों face. के या वो जो बुढ़े बना रहे थे ना लोगों को. हाँ भाई बुड्ढे like बना रहे politically थे correct अब मैं and कैसे like बोलूं some ब्रो, like like age increase कर रहे हैं.
नहीं नहीं, वो अलग था यार पांडे. यार एक सेकंड रुक जा, देयर इज अ लैग I हियर, I होल्ड didn't अप. hear that. Bro, there is a lag. 1 second, यार. I'm just connecting to my hotspot. Yeah, there's a huge lag in this. Your internet is slow, dude. तब तक तुम कंटिन्यू हाँ, कर क्योंकि सकते पांडे का ना 41% अपलोडेड आ रहा है, हम लोग का फुल 99% अपलोडेड आ रहा है. तो पांडे का हो. इंटरनेट इज लेटेंसी. अब हाँ, अब सही आया है. ना, देखो. अब अब दिख रहा है अब आवाज एचडी. आ रही है ब्रो? ऑडियो लैग है फिर भी. भाई यार ऐसा मुझे लग ये रहा है मेरे बताओ मुंह में. कि जब जब इंटरनेट खराब होता है तो उसको ठीक करते कैसे हैं? इफ इफ इट इज 180, लाइक ब्रो, अंबानी अंबानी के what do you do? शक्ल Is के there a 101 रुपया switch? Is there चढ़ाता a हूँ मैं तो button? यार हर दिन. ₹101 So चढ़ाता हूँ what हर do I दिन. do is basically switch maybe 5 gigahertz to 2 gigahertz, or switch to my hotspot. Yeah, मैंने again हॉटस्पॉट पे hotspot to. डाला. हाँ, तो What the? वही. So बट that's भाई वो how. हॉटस्पॉट हॉट नहीं, वो वॉर्म है अभी यार, सुना. पता नहीं क्या चल रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. बट पांडे, ये था कि मतलब there is an app which is selling, like which is a paid app which basically creates avatars of your photo. अरे And बेहतरीन just भैया, मैं 5G पर हूँ. अटक गया भाई तू. चोर. तुम्हारा स्पीड क्या आ रहा है पांडे? मेरे को तुम्हारे बहुत साथ मजा आ फंस रहा गए. है. मैं कुछ नहीं सुन रहा, मेरे को सिर्फ जोक से मतलब है. हाँ मतलब ब्रो आवाज इन आ माय रही है? माइंड सौरभ कब से अपना थॉट रख के रखा है, इसलिए कि पांडे नहीं, एआई से बूढ़े लोग बनते हैं. नहीं ब्रो, लाइक आवाज आ रही है अब मेरी ठीक से? आ रहा है, आ रहा हाँ, है. अब आ रही ठीक है ठीक ना? से. अब अभी सही ठीक है, है. सब सही है. ओके, हाँ, बढ़िया सब बढ़िया ठीक है. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ब्रो चलो पांडे, हाँ, वो सॉरी भाई, एक सॉरी ऐप भाई. है. There is one app, iOS. It's only iOS app, okay, on App Store. It's a completely paid app. You can't. It's non-paid app, and it actually creates art, your face के ऊपर art, like avatars, different types of avatars. And वो जो avatar जो artists के inspiration से आ रहा है, उनका signature हाँ, I उस mean like the photo पर training रहता है. data is that na, of Yeah, course, the of course. training data has signatures of actual artists. And it has Okay. copied that, right? Yeah. So you can tell कि I need this artwork in this artist style, and you get that art in similar style, which is getting copied. Okay. And Sure. you have, मतलब Which you're not which able to track it back to the original author, To because the this data original you owner. have. Bro, Hmm. so yeah, it's like anonymized right Hmm. now. See, this is a very interesting topic which comes in a lot of machine learning ka research. Ki, dude, do you genuinely have something called intellectual property with the AI age? ठीक है कि भाई एवरीथिंग तो इज ट्रेनिंग डेटा ना यार. Hmm. अब भाई अगर भगवान मेरी शक्ल नहीं सही कर पाया तो तेरा चैट जीपीटी क्या उखाड़ेगा? Bro, there's a fucking True. huge lag, But then man. What the again, fuck? if I'm putting something in public domain, No. You're fine, Pandey. It's okay. I think he's It's experiencing okay मत lag बोल from our bro. side. कि we हम did बोल रहे हैं. we did react to your joke, dude. That's all. It's okay, मत बोल bro. मुझे लोड़ा फंस गया मुंह में, क्या बोल रहा है तू? What is he saying there? What are you saying, dude? I can't hear you. भाई तुम लोग को तो आ रहा था आवाज. I just made अब a joke, आया भाई, Pandey. Like अब these guys आया were है. laughing. क्या हो रहा है ब्रो तेरे इंटरनेट का? पता नहीं भाई, भाई तू गैसलाइट कर रहा है मुझको, मुझे लग रहा है bro. I don't think so anyone heard you. I'm saying right now. The moment, समझ dude. में लौंडा. This is the moment. Okay, what the fuck is happening, bro?
Pandey, you told a joke, we didn't laugh. The internet was not the ब्रो मुझे problem. सुनाई नहीं दे रहा यार कुछ. नहीं नहीं, हम हंसे ही नहीं, कहाँ से सुनाई देगा? अरे भाई लैग वो नहीं था। बात ठीक है ब्रो, तुम लोग नहीं हंसे. अबे जोक गया उधर. हाँ आया, बट रिस्पॉन्स नहीं आया रिटर्न अब में। जाके तेरी आवाज आई. किस बात की? भाई मैं यार एक सेकंड होल्ड करो ब्रो, रुको यार, मैं ना वाईफाई चेंज करूँ यार पहले. चिल चिल पांडे इतना पांडे चिल बड़ा आ नाउ गया नाउ भाई मतलब अभी मतलब। थोड़ा सा अनफनी हो रहा है, ड्रैग कर रहे हैं अभी हम. या बट मुझे यार ये बता जाता है ना, व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम पब्लिक डोमेन में अब है? ठीक है. वो यूज कर रहा है तो करने दो ना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है तेरे नहीं नहीं, फर्क ये पड़ रहा है कि इफ आई एम पुटिंग इन लाइक my time and effort to write some code, for example, and I'm open को? हाँ. sourcing it, right? I'm open sourcing it with the condition that everybody that's using my code will also have to open source Bro, it. but that is a specific For license, example, na yaar. That is Apache and like what GPL and all of these fuckers. yeah, like नहीं, yeah, बट Right? GPL, बट GPL. Generally. वो जो चैतन्य So आर्ट जो बनता the है. thing is, चैतन्य, वो what एग्जाम्पल G, के जगह ना, यू हाँ, शुड टेक द actual example of music industry. Okay, that is a great example to take, because that's where मतलब ये जो ऐप था ना, मतलब which was where you could download the MP3 and use it, then Songs.pk. नहीं नहीं, नौ भाई वो इंडियन था, वो यूएस में कुछ और अच्छा. उसका नाम था. uh, हाँ Napster. वो वाला. ओके, एंड देन Apple Music started, it disrupted, then Spotify came, it disrupted, and now people are not downloading, okay, because they made it very seamless and all that. I watched actually the series on Spotify, how Spotify was created. So it's basically you are stealing away royalties of an artist who actually put out their creativity authentically, and you're not giving them the rights. Matlab, they should be earning out of it, Are dude, so wasn't but this someone this else. what wasn't this the entire conversation why Taylor Swift created, like, re-recorded and remastered her entire thing? Because everything तो was owned by like fucking some company. तो उसने भाई सब कुछ जो फिर से पूरा रिकॉर्ड किया था. Wasn't this the same scene? Yeah, but to circle back to Dharya's question, essentially problem ये है भाई कि अगर as a human being I'm putting effort into some form of like any form of anything, I'm creating something that according to the current precedent is owned by me. So anybody who's using it commercially owes me something, right? And I will set the terms for what they owe me. ऐसा नहीं कि भाई तुमने मेरा ठीक यूज किया है और तुमने चेतन, $2 थॉट पकड़ा मेरे एक्सपेरिमेंट हाँ. है. एआई की हम्म, जगह इफ इट वाज अ ओके. ह्यूमन बीइंग, लेट्स से किसी ने टेलर स्विफ्ट का हम्म. गाना सुना एंड उसका सिमिलर एक गाना बना दिया. लाइक दे आर अ बिग फैन ऑफ टेलर स्विफ्ट, दे हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन एंड एवरीथिंग, then it is okay. Like we have specific. No, It's How dude. is it not. not It's okay? not. That is no, If yeah, they're yeah, that's the point, right? okay. Here, if you have drawn inspiration, inspiration is inherently defined as something which is very considered to human beings, right? Ki, there is a very fine line between inspiration and mathematics. कि भाई मैंने ये देखा तो मैं ये करूंगा versus this is something which I liked. तो जो end result, the reason why we are doing this in the first place is something completely different. The reason why we are doing this is because we like someone and we're probably paying tribute to them, right? The reason why AI did this is because भाई I saw I do. अच्छा बट पांडे इसमें ये भी तो केस हो सकता है ना, लाइक इमेजिन मुझे गाना बनाना है, आई एम अ बिग फैन ऑफ टेलर स्विफ्ट. एज अ प्रोग्रामर द ओनली थिंग आई कैन डू, लाइक आई डोंट हैव एनी म्यूजिकल टैलेंट, so I can write a piece of software which generates music, something like that. Now, how is that like harming Taylor Swift? I know it नहीं, might harm that's my Taylor Swift, point. but the thing is like जैसे हम humans को आ रहे हैं, it becomes okay. अगर human चला गया तो it becomes not okay. Why is that a thing? Like नहीं, again, that's my point. Humans आ रहे हैं, it's okay. Humans जा रहे हैं, it's not okay. That is not my point. My point is what we define as a conscience, what we define as the ultimate purpose, why we are doing something right now as we exist in this time frame, is
स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव ओनली टू ह्यूमंस. व्हाट यू आर सेइंग कि भाई तूने भाई मान लिया यार टेलर स्विफ्ट के गानों को लाइक सैम्पल कर दिया, उनको लूप पे रिकॉर्ड कर दिया यार, तूने उसे कुछ इंस्पिरेशन लेके उखाड़ दिया. द पॉइंट इज कि पीपल स्टिल नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. Right, when an AI is doing that, it becomes sort of a tricky point. Why? Because मैंने टेलर स्विफ्ट के गानों से कुछ सीखा, मैंने एमिनेम के गानों से कुछ सीखा, मैंने किसी और के गाने से कुछ सीखा, बट भाई वो मैंने सीखा सीखने के लिए नहीं. उसके अंदर मैंने कुछ अपना ट्विस्ट नहीं डाला, मैंने कुछ अपना सबवर्जन नहीं डाला, मैंने कुछ अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं डाला. राइट, वो कॉन्शियसनेस का जो पूरा पॉइंट है, जो पूरा मुद्दा है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं किया ना यार. तो जहां से ये आ रहा है, तुम अल्टीमेटली इसको बैक ट्रैक किस पे कर सकते हो? इंसानों पे कर सकते हो कि भाई इंसानों ने जो पब्लिक डोमेन में डेटा है वो उठाया, उन लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको ट्रेन कराया, एंड वो अब भैया अपने बिजनेस यूज, सॉरी नॉट पर्सनल, बिजनेस यूज के लिए ट्रेन कराया, अब वो बिजनेस यूज के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, अगर तूने भाई टेलर स्विफ्ट का तू फैन है, तूने कुछ किया, तो डू यू एक्सपेक्ट रॉयल्टी फ्रॉम इट? नो यू डोंट. आर यू चार्जिंग पीपल टू हियर योर म्यूजिक? नो यू आर नॉट. You and now as a fan you did something that is different, an inspiration you took that is I'm not different. saying as a fan. I'm saying as a proper professional musician. Like I'm pretty sure That Cardi is B what I'm ने coming. Taylor Swift के गाने सुने रहेंगे. Right, And no matter what we do, it kind of influences whatever we produce. 100%. Right? That also is a But black box for कितना me. influence? अगर तुमने भाई टेलर स्विफ्ट ने लिखा x, तूने लिखा भाई x+1, that is something which is very similar ना यार. That is But what then chat gpt I and AI think systems are doing. ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंस है, इट इज अ ब्लैक बॉक्स वेर इट इज इमेजरेबल. जैसे मैंने बचपन में किसी के गाने सुने रहेंगे, लाइक सम मेटालिका सॉन्ग. I get an inspiration 100%. from there. It kind of 100%. influences me, right? Like, यार आई टेक द क्लीनेस्ट एग्जाम्पल. तुम शेरो शायरी देखो, जो भी शायर हैं तुम्हारे, जो अभी के आ रहे हैं या फिर जो पुरानी सदियों के रहे हैं, all हाँ, of us are very heavily influenced by like a couple of particular people. Like for me that is Rahat Indori, for someone that might be someone else, Firaq Gorakhpuri, Nazir Akbarabadi, all of these करेक्ट people. करेक्ट Right, करेक्ट. हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस किस चीज का ले रहे हैं कि भाई आप लोग लिखते क्या थे, कि भाई जो लिखते थे वो गजब होता था. ठीक है, बट उसमें जो हमारी सोच है, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारा जीने का नजरिया है, वो हमने डाला है. राइट, मेरे कहने का मतलब क्या है कि व्हेन इट बिकम्स an experiment without emotions, because we are not able to replicate or define emotions right now. ठीक है, that becomes a whole other topic in epistemology. Because we can't define or add emotions, it becomes something which is completely specific to what? To machines. And what are those machines doing? What humans are telling them to do. Are they attributing it? Are they saying कि भाई अपनी शायरी सुनाने से पहले उन्होंने बोला कि भाई नज़ीर अकबर आबादी ने हम ये लिखा था, तो हम हमारी भी दो लाइनें हैं इस पे कि चंद मुक्ते सुनिए हमारे. नहीं, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये मैंने प्रोड्यूस किया है. You understand the attribution का point I'm making here, कि where it's coming from Yeah, and versus what it's going also to. Pandey, the attribution का part में even the AI somewhere doesn't know where to attribute to. Precisely, कि Yeah, भाई तूने टेलर Yeah. स्विफ्ट, एमिनेम, नाज सबसे सीख रखा है, तो तू किसको एट्रीब्यूट करेगा? Now exactly, you can exactly. also give an argument on the other side कि dude, because तूने इतने सारे आर्टिस्ट को उठा के कर रखा है, maybe that is your own thought, but it's not. That is mathematical. Yeah. Right, so there it becomes lack of a human connection, or not human connection, but lack of तो ये emotions. डिबेट More थोड़ी सी importantly, philosophical जा रही है, like how we define consciousness philosophical है, हाँ. Yeah, and it Yeah, will. originality. exactly. Yeah, But yeah, more it will importantly, it will yeah, go yeah, it will exactly, go on that exactly. direction. But like इस बात पे ना मुझे पूरा एक इंडस्ट्री के बारे में, like I want to talk little about that. Okay, and धैर्य Web3. जो बात जो बात बोला है ना, मतलब वो इतना accurate है because you know why reels, TikTok, do you know why मतलब how these people are making money, like what's the funnel, like this is not very clear to the users and people out there, Hmm. Who are making money? how TikTok and reels are making money. Influencers. Okay, Okay. like this funnel, the whole thing, it is very unclear. um Pushpa ka, okay, I worked very closely with the uh,
entertainment industry for a while, okay, like, and got to know a couple of things. Pushpa ka do song, okay, Shrivalli and another one song made 100 crores in revenue. Just two songs. Just two songs. Okay. And Easy, that's the easy. market of music. And that's the reason why Bollywood ka movies, the Indian movies, don't want to remove songs from the movie. Okay. So now what is happening? Each time you play that music on YouTube Music, Spotify, They're getting any some app, royalty. they are getting royalty, they are getting paid Hmm. the way, Hmm. same way how you are watching YouTube video. Okay. Hmm. And someone is earning money out of that. No, Hmm. ye ho gaya industry before pre TikTok and reels. Okay. Hmm. अब बात क्या आता है, अब टिकटॉक आता है, रील्स आता है. Okay. So now TikTok and reels are somewhere buying the rights of those songs to list those songs on their app. Okay. Hmm. And now each time that thing is getting played, okay, again they are going to get paid. Instagram is paying the music producer again. Okay. तो इसमें बात क्या आ जाती है? Okay. This I watched one very good मतलब एक documentary on YouTube by Vox कि now how what creators are doing is they are find मतलब मान के चलो कि चन्ना मेरेया है. Okay. And Dhairya is a creator. What he is going to do, he is going to make a cover of the same song. Okay. वो अपना गिटार बजाएगा, अपना वॉइस में मॉड्यूलेट कर देगा, और उसका 30 सेकेंड वर्जन वो टिकटॉक या रील्स पे डालेगा. ओके. एंड उसके प्रोफाइल से पीपल नाउ व्हेन दे उस पे वीडियोस बनने लगते हैं ना, वो Use that बढ़ने audio. लगते हैं. तो Mm-hmm. देन द पीपल गो एंड सर्च फॉर दैट सॉन्ग बाय धैर्य चन्ना मेरेया on Spotify and YouTube. So now Dhairya becomes a independent creator who is operating like a music distributor. Okay. And there are people who have been given like millions of dollars, like who are making millions of dollars. Okay. जहाँ पे वो rap कर रहा है और ये कर रहा है, and like they are getting paid like shit ton of money, and people are buying now the copy. मतलब the music industry is buying the copy. Okay. And paying them the royalty for the copy. अब चन्ना या मेरेया एक बना, but धैर्य का viral song has मतलब is making more money than the actual Channa Maria ka song on TikTok and Reels. So now the music industry will actually pay Dhairya to buy the rights of that song, to buy the royalties of that song, so that each time that gets played on Spotify and YouTube, okay, that music album, मतलब वो जो भी distributor is making money and not Dhairya. Okay. So this is the whole funnel. Okay. अरे When you talk about, हाँ बोलो, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मेरे पास. Like this is something you folks might have seen which is happening a lot in the industry right now. Again, I am by no means an expert, but like from a third party, third person perspective, you look at like some of the songs we used to listen to back in like early 2010s, late 2010s, right? कि भाई Brown Munde and all of these तो अभी आए हैं, but like जो पहले के हमारे गाने, Dope Shop and all of these fuckers, right? जब लोग पहले सुनते थे भाई, these guys are getting remastered, ठीक है, and ये movies के songs बन रहे हैं अब. And what Saurav said right now, I have a very very good example. Do you know someone called Yohani? Yeah. राइट तो उसका जो श्रीलंकन. ओरिजिनल सॉन्ग था श्रीलंकन एग्जैक्टली उसका जो ओरिजिनल सॉन्ग था दैट वाज इन अ श्रीलंकन डायलेक्ट. इफ यू लिसन टू कौन सी तो मूवी थी यार, वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लौंडे के साथ. Oh, अरे नहीं. So that song, particular tune, has been Shersha. copied by a lot of movies, not just Bollywood, uh, like अरे Kannada भाई movies. पप्पी लहरी एंड ऑल ऑफ दीज फकर्स, भाई ये लोग पहले क्या करते थे, देयर आर लाइक आई वाज वाचिंग दिस स्टैंड अप वंस ऑन कोई मिल गया, और उसके अंदर यही पॉइंट निकल रहा था कि भाई अगर तुम ट्यून देखो ना इन बहुत सारे गानों की, तो भाई ट्यून सेम रहती है, जो रिदम हाँ. रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, उन्होंने शब्द बस चेंज कर दिए हैं, गाने का ठीक है. शब्द. Yeah, Karan is तो the आलस, fucking मोटापा, घबराहट. stand up. like the point then becomes, dude, who do you attribute it to? no, that is somewhere happening already ना, मतलब अभी भी हो ही रहा है. Like this was a public debate where the original author, original singers don't like the remake of the song.
but they can't do shit because they have sold the license to the to distributor. someone else. Bro, Yeah. fucking मसक अली हाँ. मैंने सुना, हाँ. मैंने बोला भाई Yeah. मुझे कान के पर्दे अपने फाड़ने हैं. Yeah. 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 So even this is happening right now, but like I just feel ki AI, coming back to how AI is going to disrupt art is ki I feel somewhere it is going to be super personalized. Super personalized. Okay, कि मतलब the kind of music what I am going to listen is probably no one, like 1 in 1,000 people are going to listen to the same music, and like it might get tuned, very fine tuned to my interest. Okay, maybe pick elements, like I just like some songs where few lines are there. Okay, and repeat that thing, and there हाँ. might be some learning models which actually create another song by just combining some 4 5 favorite parts of my song. Okay, and now I'm listening to that, making a new track altogether and things like that. So I just feel ki, but again, Saurabh, it's you know what? I feel yeah, like, just to add on to this, I feel there's yeah, another huge avenue for like dynamic content as well. Like yeah, yeah, music just doesn't need to be an MP3 file now. It could yeah, be a dot XYZ file, which मतलब it's kind of like तुम AI को prompt दे रहे हो to yeah, generate a song which yeah, they release based on yeah, this. You're actually यार selling the prompts, and मेरा जो music player है Spotify, it generates the music based on whatever my mood is right now. yeah, यार but yeah. one thing I think so we all need to sort of understand and realize is कि यार the reason like what Saurav just said कि यार मुझे ना कुछ गानों के कुछ लाइनें बहुत पसंद है. वो लाइन लिखी किसने, वो लाइन तो किसी इंसान ने लिखी है ना यार. Hmm. ठीक है, और वो लाइन उस इंसान ने लिखी कैसे, उसको भाई पहले शब्दावली जाननी चाहिए, उसको वोकैबुलरी होनी चाहिए उसकी. दूसरी Hmm. चीज़ उसके जज्बात क्या थे, इमोशंस क्या थे. ठीक है, तब उसने बोला कि हाँ भाई ये फिट हो रहा है यहाँ पे, मज़ा आएगा, एक बार लिख के देखते हैं. ठीक. नाउ द थिंग इज कि हाउ डू वी डिस्कवर न्यू सॉन्ग्स, राइट. वी डिस्कवर कि यार बेस्ड ऑन व्हाट वी आर सॉर्ट ऑफ लाइकिंग. ठीक है, लाइक स्पॉटिफाई डज दिस आई थिंक सो क्वाइट नाइसली कि यार आई प्लेड समथिंग, उसमें चला दूँ तो द नेक्स्ट कपल ऑफ सॉन्ग्स विच विल प्ले आई विल लाइक देम, राइट. आई डोंट वांट देम टू बी सुपर पर्सनलाइज कि भाई हाँ भाई श्रेयांश पांडे ने भाई 21 तारीख को टट्टी की थी. मुझे उतना इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है और ना तो जानना है, बिकॉज देन यू गेट इनटू द पॉइंट ऑफ प्रिवेसी as well, Hmm. right. How the more you personalize something, the more information there is about you, right. Yeah, but here So the point, मतलब ये तो मतलब नहीं थोड़ा श्रेयांश here, sorry go Saurabh, go on. या थोड़ा ये डिविएट हो रहा है, but point मतलब the thing what was raised by Chaitanya was कि how are you going to credit the original author, because nothing is original, right? Like even the AI what is creating, it's claiming to create, but it's not creating something very new. yeah, it's It is pasting it's things still. together which you might like. Yeah, exactly, it's stitching things together, stitching pieces together, where the pieces are somewhere again from the real world, real data. So there has to be some sort of mapping कि अगर ये art create हो रहा है तो ये artist से हो रहा है. Okay, and if मान के चलो कि um, that art is somehow getting sold or getting awarded something, like tomorrow I'm pretty sure that's going to happen. Okay, we might have these musics listed on Oscar. Okay, and so Yeah. how are we going to list, मतलब ये मतलब attribution वाला part will become very critical, because that's something which is getting raised very 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 prominently even now. मतलब वो होने वाला Yeah, I think so More attribution तो importantly, will always be a part of the kind of, yeah, exactly. right. It always has been a है. problem. But the issue is the scale at which it's happening right now. They literally scraped off the entire internet, right? And they have this model that has been trained on the entire corpus of publicly available data out there. And how can you possibly claim ki, yeah, bro, we own this model? You Exactly. And don't. You spent money on compute. You spent money on writing web crawlers, but that's yeah, about it. see, that is again the discussion between intellect and regression.
the models we are using are regressional models, right? My Exactly. point being what? My point being कि यार Yeah. अगर किसी की अब इसके अंदर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग लीगल डिबेट आती है. I was listening to a podcast on YouTube only a while ago. Now the point they brought up is कि यार चलो ठीक है भाई, मान लो तुमने कुछ लाइसेंस किया, ठीक है. Now there is US में very prevalent fair use policy कि if you're using it for commentary, if you're adding something yourself वगैरह वगैरह, so it is कि भैया माफ है. Then it becomes a problem in two ways. One, कि भाई डू यू इवन नीड टू एट्रीब्यूट इट. चलो ठीक है यार, लोगों ने एट्रीब्यूशंस दे रखे हैं उसके किसी भी तरीके से, वॉट एवर मेथड दे फिगर्ड आउट, फेयर इनफ. Technically that is modified content, right? That can be thought of as work which was done on the original content. So the the owners are thereby changed. ठीक है कि भाई धैर्य ने कुछ बोला, मैंने उस पर अपनी दो लाइनें कुछ और सोच के डाल दी, ठीक है. मैंने जो उसका पूरा नज़रिया था वो मैंने पूरा चेंज कर दिया. वॉट एवर ओरिजिनल थॉट ही हैड, लाइक अरे वो इंस्टाग्राम टिकटॉक पे था, वो डुअल्स करते हैं, डुएट्स करते हैं, जो भी करते हैं वो बकचोदी, ठीक है. सो इफ आई हैव लाइक अ मेजोरिटी पार्ट इन दैट चेंज कंटेंट का, जिस भी तरह से तुम देखो, जिस भी नज़रिए पर्सपेक्टिव से तुम लोग देखो, हु ओन्स इट नाउ, right? Then it becomes a recursive debate ki dude, the reason why AI is modifying this is because why AI got trained on this. The reason why AI got trained on this is because you people modified it. So then it becomes ki dude, where is the originality in the content we are seeing? Because right now what we hate on Spotify और YouTube कि भाई सेम तरीके के गाने यार भाई अगर 2 घंटे के लिए चलेंगे भाई मैं तो लैपटॉप फेंक दूंगा अपना, ठीक है. तो उसके अंदर हम लोग को नया पसंद कैसे आता है? That also Yeah, becomes a point. Pandey, I'll like इस thought पे I think if future में ऐसा होता है तो it wouldn't be the like a very linear thing, right? Like जैसे YouTube करता था पहले and now they have changed their recommendation system for you to keep engaged. Like it's not like मैं cricket videos देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ cricket का video दिखा रहा है वो. Now it shows me वो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ like दिखा रहा है. correct. It might show me Rahul Dravid का कोई और video like some ad. It figures out मेरे को राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है, then it'll show me cricket का ad. So I think Spotify will do definitely something similar if what we are discussing comes into play. Like they wouldn't be like same song दिखा रहे तुमको. They'll understand कि पांडे को किस टाइप के song अच्छे लगते हैं. They'll optimize for you spending most of your time on Spotify, not for your personal 100%. interest. And I feel that is the larger debate. I feel that is the more worrying point for me, is that uh, like ethics and like originality of thoughts. How does that come in here? Because See, originality of thought comes in here at a very nuanced level, ठीक है. तुझे कोई गाना क्यों पसंद आता है? Because there is something which intellectually rings with you, right? तुझे is that the case, or या फिर it might be a point wherein मुझे एक गाना इसलिए पसंद आ रहा है because the entire fucking algorithm has trained my mind to only accept हाँ, कि भाई ते so where is 100%. वो that तो fine line? श्योर दैट फाइन लाइन का अभी हम लोग को कुछ पता नहीं है. अभी जो हम लोग को लगता है वो क्या लगता है, हम लोग भाई कुछ गाना सुनते हैं यार, देखो दो तरीके के लोग होंगे. एक कि भाई वो बैकग्राउंड में गाना सुन रहे हैं, they're not paying any attention to it, it's just some noise which is occupying my brain. कुछ होते हैं कि भाई जिनको हाँ बोलते अरे भाई ये लाइन बहुत बढ़िया थी, ठीक है. अब वो जो इफेक्ट होता है उस एक लाइन राइट, तुम उस पर किसी जीपीटी या किसी भी सिस्टम को, फॉर दैट मैटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कैसे ट्रेन कर लोगे? वो तुम्हारा फिर से कॉन्शियसनेस में आ जाएगी बात. चलो यार तुमने नहीं जो नहीं बोला, पांडे जस्ट हेयर मी आउट. अभी म्यूजिक की बात अलग है. इमेजिन we now also have AI generated news. Like तुम्हारा श्योर जो न्यूज ब्रो, वो पोलराइजेशन जो होता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट एट ऑल. आई एम सेइंग कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इनहेरेंटली ह्यूमन, राइट. आई एम नॉट डिनाइंग योर पॉइंट कि डूड वी लाइक व्हाट वी आर ट्रेन्ड टू लाइक, राइट. मैं वो मना ही नहीं कर रहा हूँ भाई. हम लोग ने भाई आईसीएसई सीबीएसई पढ़ा है, वो पूरी 10 साल वही कर रहे थे हम लोग, ठीक है. माई पॉइंट इज समथिंग एल्स. माई पॉइंट इज कि डूड उसके बावजूद कोई एक ऐसा मतला रहेगा जो हमको इंसान बनाता है ना, कुछ ऐसा कारण रहेगा, कुछ ऐसी चीज रहेगी
राइट। आई एम सेइंग कि यार वो एक चीज को रेप्लिकेट करना, अगर वो रेप्लिकेट हो गई है देन तुम्हारी वो फिर से वो कॉन्शियसनेस की डिबेट में चली जाएगी कि देन हैव यू क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज कॉन्शियस, then that will become its own entity and that will be a completely different argument. I am saying कि भाई ठीक है, you like the news what you're shown, you like bloody how retargeting and remarketing works, it's the complete same thought, right? कि भाई 10 लोगों को भाई ये तरीका पसंद है तो मैं इस तरीके से इनको दिखाऊं, वो वो दैट इज कम्प्लीटली ट्रू कि डूड मैंने अगर भाई पूरे, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इन फिलोसफी ऑल्सो, समथिंग कॉल्ड द ब्लैक स्वान एक्सपेरिमेंट, which basically says what, here if I have only seen black swans my entire life, I'll always think ki swans are black. The white swan is Exactly. the exception. Right. Yeah. So that is a completely different argument and debate. My point is what कि dude तुझे दो लाइन तो पसंद आई ना कहीं पे, तूने यार तूने ठक्कर को सुना, तूने रवीश को सुना, तूने इन लोग को सुना, उनकी कुछ बात तो तुम्हारे साथ रेजोनेट की होगी ना। अब वो क्या बात, क्या तुम उसको मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हो अभी? See, that's the thing though. That's the thing. Like, neurologically speaking, the human brain is essentially a prediction function. It predicts what, like, binary में predict करता है, by the way. ठीक है, I don't remember where I read this, but essentially your entire human brain predicts कि what is your next best action to achieve XYZ. XYZ being your primal objectives of food, shelter, water and reproduction. ठीक है ना? तो essentially if let's say, and what does the autoregressive LLM do? It essentially predicts the next word given a set of words, right? Now if you can get prediction right, and let's say you can GPT-4, you've added modals, right? It's multimodal, you can also add images. So if you basically have an autoregressive model that can predict language, visual and auditory, and maybe spatial, if spatial is that important, then you have a functioning Not human being. necessarily Like, ना at this Bro, point, bro, I'm bro, convinced. वो Like, वो not the at वो more all. बात this, तो नहीं the होगा more this यार, debate मतलब goes यार on. ऐसे सोचना कि यार जो तुझे लाइक व्हाट यू सेड इज कि भाई मेरा ब्रेन अगर बाइनरी में निकालता है, अगर मैंने बाइनरी में निकाल दिया दैट विल वर्क, नॉट नेसेसरली ना। व्हाट यू लाइक एज अ वो 2-year-old kid is different from what you like as a 20-year-old human being, right? तो वो जो तुम्हारी True, एवोल्यूशन है true. वो तुम कैसे But, डालोगे? but, as what is evolution? What is the like? If you take down evolution to the person level, as a person from the age of 16 or 17 to 21, 22, I have evolved due to the Sure. experiences. What are experiences? Training data. But how you Right? I did something. I did something. I received 100%. feedback from my environment saying this worked out, this but didn't dude, work out. right now Chaitanya, You getting it? every experience ना मतलब the way it is getting perceived, like we all four could be in same environment, okay? Same situation, but the perception Yeah, will they are depend on your functions of previous our experience. Even society. let's imagine if there was, even if there was different perceptions, okay, even if there were different perception or Mm. no perception at all, okay, I still believe, Mm-hmm. like this is my belief, that we are going to see Mm-hmm. that situation differently, okay? Sure. Maybe 50% might be same, okay, or 30% can be Exactly, same, exactly. but there will definitely be difference, okay, and that You're saying the vast majority of the different, yeah, perception will be different, right? yeah. Essentially, there are two aspects of any machine learning model. Okay? The first is the initial weights. Now, these weights are random. These are what you call your seed weights. ठीक है ना? And then based on the training data, these seed weights are modified, all that. What you are saying is that our seed weights are different. Because what did you say कि अगर पहले का perception ही नहीं है, let's say तुम इस second पैदा हुए हो and this is the first action you do and this is the first action you receive feedback on, right? let's let's have like a small thought experiment. I initialized to one artificial neural network and one human neural network with the same weights. For example, assuming that's possible, right? Now
And I also give that artificial neural network all the modals that the human neural network has: spatial, haptic, audio, uh, visual, and language. ठीक है ना? Now, if this neural network, artificial neural network, has all these modals at its command, and the human neural network does, and they have the same weight, what do you think is going to If happen? your Bro, question is, this will is they be the I same? Like, I but I the feel ki this is moment all the knowns, right, Chaitanya? Okay, and Exactly. this is this all is the all knowns. known, This is okay, this is I don't the follow. human intellect which has been able to comprehend, and we are able to tell. Okay, what if there is sixth Okay, sense which we don't know about? Okay, See, true, like it sixth could true. sense we be don't know it about. Sort of just something. to add to what you said, right? Yeah, That is conscience, right? That वही is वही मतलब consciousness, rather. yeah, so it could be it could Hmm. be anything else, it could be anything else. Okay, I'm not labeling it as consciousness. Okay, it could be something else. Okay, I somewhere believe, I don't know, like this is very hypothetical. Okay, from some Hmm. books I have read, some stories I have heard, somewhere I believe brain is more like a portal. Okay, Hmm. and it's not a memory storing device in human brain. Like, and somewhere I feel Ah, that's the reason, that's the reason, right? Like, because people are treating it as a hard disk, a storage mechanism. Okay, ah, somewhere computation. Okay, hmm, that they are missing out on the part. Okay, that maybe this could be something else altogether. Okay, hmm. that we have within us, which we are not able to track because we are labeling the problems as different thing. Okay, Yeah, so I somewhere feel it's one of the biggest mysteries of this world. Okay, and the day we realize it, or the day we are bound to find it, or the day we discover it, knowingly unknowingly, kaise bhi. Okay, um, that would be something else. अब जितना भी we can talk कि हाँ AI बन जाएगा, like they will imitate us, they will do all the actions, they will do things, but still humans are going to be humans. I'll tell you why I feel and why I think this way is, um, like I how much of a people might disagree, right? But each humans are connected. Okay, every human, like all around the world, somehow or the other way. Okay, and we just need few chords to strike to believe that ki, yeah, we are alike and we are similar and we are the same. We are feeling the same things. So it's like more like a node. Okay, different nodes. Okay, and these are connected through a chain of connection. And something. yeah, something on those lines. Like that's how I see and how I think. Yeah, 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 bolo one bolo. thing to also yeah, add. I Chaitanya, was raising Dhairyaj, my and hand, Pandey. Pandey. Don't talk Yeah, now. yeah. ठीक है, ठीक है. We were both raising hands. In the video, we were just like हाथ उठा लिया हाँ, था. बताओ In बताओ real बताओ. life, he's looking for the button. Okay, I have three quick points. First one, to all our viewers, statutory warning: we do not promote We do nicotine not. consumption or any other thing Absolutely that may don't. shorten your life. We do मैं not, तो करता हूँ ब्रो. absolutely do not, despite the fact that ये पांडे का ब्रो थ्रोट मैं सुनता तो है. करता हूँ सपोर्ट. ओके, तुम गेस्ट हो, ठीक है, हम हाँ भाई, टेक प्रो तुम गेस्ट हो, पंचायत की तुम्हारी बात कर औकात नहीं है, बेसिकली व्हाट यू हरामी. से. Okay, second point. Second point, dude, I'll tell you, I strongly agree with what you're saying about the sixth sense or the human brain is a portal and not a hard disk. But I'll tell you something. It is it is very unclear as to if it's even true, or if it's like, how the large like ChatGPT and all, they hallucinate, they say things that are not actually true and all that. I've had the experiences that at that moment led me to believe, ki actually, dude, I can feel some cosmic, vibration and stuff like that. Not to diss on anyone. Maybe I'm not that deep in that journey to actually feel it.
But the thing is, a few years later, I realized, ki, bro, it might have just been some neurons firing in my brain, just like Randomly. Yes. that had that symphony, So, no, Yeah. like that's a possibility. Last point is that thing you said, about everyone is connected, on this planet. It's an interesting theory, actually. The human brain cannot hold more than 300, a few hundred people. Like the moment you have, like, the people in your brain are the 500 most significant people in एक your second. life, and I that's it. want to add something to what Chaitanya is saying. This is Hmm. what I had to say. The human brain has a very, very, Hmm. Hmm. very limited storage capacity. ठीक है? The way we perceive Hmm. things Hmm. is Hmm. not what they are, but what they look like. Right? Which is very interesting thing called the Exactly. Gestalt theory of cognition. How do we see what we see? Right? Hmm. हम लोग अगर किसी चौकोर चीज को देखते हैं, Hmm. क्यूब को Hmm. देखते हैं, वी डोंट थिंक कि हाँ भाई दिस इज द स्क्वायर. वी सी उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, which then makes it a square for us. Hmm. Have you guys seen those Like image segmentation. illusions जहाँ पे like they just change the position based on the background object का and it changes the color. It's Hmm. Parallax like ना. Hmm. 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 no, not Hmm. Hmm. parallax. Hmm. What happens is एक imagine there's a sunset का gradient, right? नीचे पर्पल है, ऊपर ऑरेंज है, अच्छा and तुम there's a gradient. आगे जाते रहोगे, it will So keep on. तुम्हारे पास एक सर्कल है जो येलो कलर का, तुमने उसको नीचे रखा तो वो ब्लैक हो जाता है और ऊपर करते हो तो वो व्हाइट हो जाता है हाँ 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 अपने हाँ आप. हाँ. इट्स बिकॉज अ ब्रेन परसीव्स कि यार वो बैकग्राउंड में ऐसे लाइट ऐसे आ रही है तो इट इज सपोज टू लुक लाइक दैट. So our brain सेम इज tries द to help केस विद. us, but fucks up like JavaScript. Hmm. Yeah, I think same is the case why people associate blue with white. जैसे if something is white उसको थोड़ा सा Yeah, blue tinge yeah, कर देते हैं, yeah. people think it is more white than the actual other white, whereas in general it is becoming blue, it is becoming Yes, less white. yeah. Also, one last thing. Sorry. Um, wait. I just had in my mind. I forgot. Yeah, the thing about, like, we. So due to this AI thing, I've seen a very common, like, two-way split amongst the kind of people who are putting their views out there. The first one is कि bro, AI आ रहा है and we are screwed because this thing is gonna become us, but much better. That is my group right now. Let's call it that. In this group of four people at least, I feel like I'm representing that group. And the other group is coming from like Saurav Pandey. It's like, bro, humans essentially are humans, and any artificial neural network cannot possibly be that complex or be have that missing factor that we are calling consciousness. Right? Now the thing is, I feel that as humans we are trying to give ourselves way too much importance, right? That could यार be something. Like it's a Yeah, bias. so Think about now it. It's a I'll I say bias. would. something. ये धैर्य मैं धैर्य काफी टाइम से या धैर्य. बोलना चाहता था is that बोलो बोलो. I don't think consciousness is like one thing. It's always an evolving thing. अगर तुम evolution ही देखो तो like single cell organism से how did we become humans? अभी बीच में ऐसा कुछ instantly कुछ change तो नहीं हो गया. It was a very gradual process. And I think जो हम बोल रहे हैं कि if there's some sixth sense or whatever, uh, if we do figure it out, we'll never understand कि हमने figure out कर लिया है. And the moment we do figure it out, we'll be like कि there's a seventh sense. Like speaking like या in वो that आगे terms. जाता So रहेगा, right? That's correct. So evolution. so when people are saying कि AI is going to become as good as humans, I'm like, if you think of it from like a pedantic point of view, humans and AI are two different things. But from like अगर ब्लैक बॉक्स की तरह देखे तो why does that make any difference? Like why can't a AI, like why can't I treat the AI as a human? Um, तो so नहीं, इसे मेरी again like थॉट थी यार. इसमें मेरा थॉट ये था कि जो चैतन्य का जो थॉट एक्सपेरिमेंट था दैट सीड वेट सबके अलग रहते हैं. द पॉइंट हियर इज दैट कि एंड दिस इज व्हाई ओपन एआई एंड जो भी है इस पे डिबेट चल भी रहा है इज बिकॉज दे आर जस्ट क्रिएटिंग वन मॉडल, राइट. लाइक उन्होंने पूरे इंटरनेट को स्क्रैप कर दिया यूजिंग देयर वट एवर सीड वेट्स स्टार्टिंग वेट्स. ऑब्वियसली नहीं किया है बट इमेजिन इफ इट वाज जस्ट न्यूरल नेट. उन्होंने अपने खुद के सीड वेट्स डाले एंड द एंटायर वर्ल्ड
is now going to use that just one model. Like that is the biggest problem here. Like जो बार बार बोल रहे रहता है ना, which is the scale पे जो चीज copyright issues हो रहे हैं वो, अगर scale पे नहीं होता तो then it would not have been a problem. And I feel scale is one thing, but uh, क्या बोलते originality also dies down for me if the entire human race is replaced by one AI model. I think that's death of human society. But if Yeah. entire human race is replaced by everyone's models which they have trained themselves, then I feel So, it's the like I advancement. want to, Daria, I want to add here, like they did a test of the GPT to check if it is biased left side or the right side, and it's heavily left side. Okay, Hmm, and civilization, like we didn't create this civilization with just left side. We correct. created the civilization with right, middle, and left. Okay, so and each one of them has its own place in the society for its own reason. Okay, and if you are going to ask, and if we are going to make GPT as the ultimate source of truth, okay, then you're creating a biased truth which Hmm, is hmm, hmm, hmm. one-sided only. Adding to that, Definitely, that's it. I definitely. mean, Yeah. एक Just चीज इस पे one, sorry, हाँ बताओ Pandey. बताओ One last thing. The like you said, right? If we replace all of humanity with just one model, there's a very interesting tweet I read. Like essentially, people have Stack Overflow का traffic decline हो चुका है ever since ChatGPT came out, right? Stack Overflow, our Mecca का traffic decline हो रहा है because people have stopped coming and reaching out for help to other human beings and just ask this AI model to help them out, right? And the problem with that is, like, the bigger problem with that I feel is because this whole model is closed door, and we are not sharing our knowledge with each other. We're sharing it with that model, and that model is constantly updating its knowledge. We are becoming like we're अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं. Like if that model some like just decides to close its doors or whatever, we will have to start from the point where we left off before that model came. So we're losing like यार those I don't for think time. that that's a strong specific argument. example, I have a counterpoint for you. The reason why people are leaving Chat GPT is because of humans. Because humans suck. Have you seen the amount of toxicity on Stack Overflow for a new user? यार Chat GPT तुझे 10 लात नहीं मारेगा ना यार. I have. ठीक है. It'll just tell you what you need to know. Fucking Stack Overflow पे like fucking -5. For what reason, dude? I don't know how to ask a question. How do you ask a question? You learn it. Right, and there are a lot of communities which are trying to do this, right? कि यार there is okay, so now the debate, see, you said कि यार I'm thinking कि there is something which makes AI inherently different from us. My point is not that, ठीक है? My point is not कि dude they can never be the same. I'm saying कि they can never be the same till the time we figure out what makes us different. And right now we don't know what we don't know. ठीक है, टेक ब्रोस हैं तो अननोन अननोन्स हैं हमारे अभी बहुत सारे. ठीक है, the simplest example I could take of that was consciousness, because right now there have been some researchers which say कि भैया consciousness is a different form of matter altogether, right? There are some which say कि भाई it's something completely different, etc etc. The point being what, कि we don't know what we are trying to look at. हमको पता कैसे चलेगा? ठीक है, And we have AI we के have अंदर created, and also we have created something with how much ever we have known. एग्जैक्टली कि Yeah. डूड तुमने अपनी खुद की नॉलेज उसे दी है जो Yeah. अब वो फिल्टर आउट करके तुझे दे पा रहा है. बट Yeah. क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, Yeah. वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज कहाँ से आएगा? हाउ डू वी नो वी हैव क्रिएटेड समथिंग? हाउ डू वी नो कि भाई E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इज समथिंग व्हिच इज ट्रू? You know the Socratic method, you know the method of Aristotle, right? How do you know that method works? Chat GPT, like let's say it had every single thing, like let's say it was a n-dimensional being which has the ability to like run experiments, talk, figure out, collect data, draw inferences from that, all of that. How will it know what it's looking at till the time it has some form of evolution?
the most primordial form of evolution we have for artificial intelligence is neural network, which is based and which is based on what? It's based on our brain. हम लोग के जो समझ में नहीं आ रहा है, हम लोगों ने उसके ऊपर एक मॉडल बना रखा है, उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी बना रखी है, ठीक है। अब अगर हम लोग बाद में पता चलता है इसमें कुछ और चेंज, हाँ भाई ठीक है यार, यू नो लाइक प्रॉब्ली 100 years or 10 years or like whatever number of years down the line, we might be able to replicate what a human being is. But even then I would say कि we are creating it from our own knowledge, our own understanding, so there always be that human bias. That's what I'll say. Like I want to touch upon this one more thing, like when we tell human beings, okay, human being is not um, it's not discrete, it's more like a spectrum. Yeah. Okay. And like lot of people, I see a racist joke coming here. What is it? दिख गया तुझे? yeah, so I see it as like more like a spectrum, right? Like because like I want to take one very simple example. Okay, he, if you would have seen this, he, our parents really doesn't, they don't know how to smile on a camera. Like this behavior, okay, the just the behavior of smiling in front of a camera, like when we are taking a photo, how to be comfortable in front of the camera, like we are sitting here and talking so candidly, okay, somewhere, okay, a generation or two generation behind can't do the same thing, okay, because the exposure and the The kind of technology. technologies, yeah, facilities and exposure what they had, okay, like they feel, matlab, when we put them on that spectrum, like on the spectrums of human intelligence and things, okay, somewhere it becomes कि यार उनका skill set ना chat gpt कर देगा, okay, and then there are people who are like super exposed, and like they are creating things, they are thinking, they are talking ideas, they are writing blogs, they are creating videos, they are creating music, they are creating art, okay, these people are on the other side of the spectrum who are in the process of creating and not consuming. Okay. So I feel कि, like lot of things will only happen where अगर एक human नहीं सोचेगा कि they have to be a net producer, not consumer. Okay. There has to be some sort of creation they have to be part of. Okay. Like usually people do jobs for that. Okay. Yes. बट अगेन नाउ जॉब्स आर लाइक, अगर वो मैकेनिकल जॉब्स होगा, ओके, मान के चलो लेबर वर्क होगा, ओके, दे आर क्रिएटिंग, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये रिप्लेसेबल है, ये रिपीटेड है, ये रिप्लेस हो सकता है. सो समवेयर ना वी ऑलवेज बिलीव कि रिपीटेड, मतलब इफ यू आस्क ना प्रीवियस जनरेशन का, मतलब हमारे पेरेंट्स के जनरेशन का, कि नहीं रिपीटेड टास्क कुडंट बी ऑटोमेटेड, लाइक दे Yeah. नेवर बिलीव दैट, they Yeah. never fucking believe that कि नहीं ये कर कर ना हम जिंदगी गुजार लेंगे, बस यही philosophy था. And then comes our generation, we are like, why the fuck should I do this every week, why the fuck should I do this every month, okay, let me just write a script and it will do it for me, that's all. Okay. So, and now there will be the next generation which is coming, like which will come. Okay. And जो they will टिकटॉक पे see बकचोदी कर रही है. redundancy. Yeah, they will see redundancy in our behaviors that they will try to 100%. automate. Okay. So the spectrum is just going higher and higher and higher and higher. Okay. And whoever is at the lower bottom, like lower 50%, okay, or lower 30%, I don't know what that number is. Okay. Is going to feel redundant, and their behaviors, their skill sets is going to be मतलब Replace. vast majoritively replaceable. Okay. तो ये मुझे लगता है, मतलब यही चीज है, मतलब यार इस पे ना एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत बेसिक सी चीज है जो हम लोग तब से डिस्कस कर रहे हैं, उसका पूरा फाउंडेशन है, वो है क्रिएशन ऑफ नॉलेज. ठीक है. अभी एग्जांपल दिया गया कि भाई पीपल आर नॉट गोइंग टू स्टैक ओवरफ्लो, दे आर गोइंग टू फकिंग चैट जीपीटी. फैंटास्टिक. ठीक है भैया, जा रहे हैं भाई. ह्यूमंस आर टॉक्सिक, वी अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस हैव हैड एक्सेस. माय अदर पॉइंट टू एवरीवन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. जो चैट जीपीटी को पता है, जो वो अभी
तुमको आंसर्स दे रहा है, दे रही है, वॉट एवर जेंडर और सेक्स इट इज. The point becomes, how does it know what it knows? It knows because by humans created that knowledge. They then trained that, whatever model it is over that data. Now the problem becomes कि will this remain the same? नहीं यार, देखो initially कि भैया stack overflow शायद एकदम खत्म हो जाए, but then हम लोगों को वहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर पॉज किया था. क्यों भाई? बिकॉज क्रिएशन ऑफ नॉलेज बंद हो जाएगी. अब इसमें एक चीज क्या हो सकती है, एडिंग टू That's सौरभ्स what. पॉइंट, कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को लगेगा डूड क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैन प्रॉब्ली आल्सो बी ऑटोमेटेड if you can define what knowledge is, right? So you see how with every generation we are sort of branching out, right? And we are trying to understand what we didn't understand. Fair enough यार, like अभी भाई वो हिग्स बोसॉन का इतना बड़ा बकचोदी हुआ था, ठीक है, गॉड पार्टिकल है, फलाना ढिमका हो रखा है. The point being what? We created information, right? How do we know this information is something which doesn't exist right now? Yeah. Right. Something, how do we know that this is something we don't know yet? How do we, अच्छा, उसको प्रूव करना मेरे ख्याल से एआई के लिए आसान होगा, उसको क्रिएट करना मुश्किल होगा. It becomes the classic PNP problem, right? कि भाई figuring out the best move for a chess game is the hardest thing on the world, but figuring out if it's the correct move is the simplest thing in the world. Yeah. So then the question becomes, how? Verifiability is easy. How do you Yeah. create knowledge? Yeah. Or let me rephrase this question. What makes us till now the only beings in our own knowledge who can create knowledge? Very, very politically careful Of course. statement you made, and I can't find any fault in it. So, मतलब No, हम I'm लोग reading this book, like I'm reading this book. It's called The Beginning of Infinity. Okay. It's basically on knowledge, like how knowledge started, how people started ideating. Did you know that like uh, like people believed that Earth was flat, okay, and we were the center of the universe, bro, and was मत बोल. There are people who believe that. okay, True, and true. they believed in sky when it's night, there were not stars but holes from the heaven where God, yeah, ताकि where सांस आ सके. God sent light. Like people Bro, believed I think this. so. Entire medieval science is just like, what if we give an IIT and some like good shit to smoke? That's puri medieval science. Like, yeah, to add to what Saurav said, Yeah, na, we also do not support flat earthers. Flat earthers and can fuck go flat fuck earthers, man. themselves. That's just like, that's Sorry. just brain Yeah. dead. I That's think like as a sitting in your own. closeted flat earther, I'm like, if you are someone, don't say it out loud. छुपा के रखो. Bro, we'll to bully you. हाँ, Like, we'll be मतलब the वही कह रहा 13th हूँ. reason. Like if, like, I never tell anyone that I am a flat earther, even though अरे I भाई believe it. सौरभ, ये पार्ट हटा दियो यार, ये पार्ट प्लीज हटा दियो भाई. ये ये पार्ट होता है. पार्ट प्लीज हटा दियो. वो मैंने बोलने के बाद ही रियलाइज किया. I became a politician there for a second. And that's okay. That's cool. Like But Yeah, I have one interesting fact to share with you guys. I don't know how it helps in the discussion, but I feel like कोई बात नहीं. somewhere along the line, my Like brain. there is no topic of discussion. We just start and हम लोग we बस go with बोल the रहे flow. हैं. That's it. हाँ, so क्या हुआ था हाँ, इंग्लैंड में. हाँ. there's something called the cattle grid, जो तुमने देखा रहेगा कि वो ऐसा तुम अभी कोई सोसाइटी वगैरह जाओगे तो वो रॉड्स रखे रहते हैं गेट पे ताकि कुत्ते गाय वगैरह अंदर ना आ सके. तो एक्चुअली इट्स सपोज टू बी यूज टू कीप फार्म एनिमल्स विद इन द कन्फाइंस. तो क्या हुआ कि वन पर्टिकुलर फ्लॉक ऑफ शीप दे फिगर्ड आउट कि हम इस पे चलने की जगह वी कैन जस्ट रोल, right? And then they actually had to quarantine that entire population of sheep so that they don't pass on that information to the other Other sheep. sheep don't find Because out. if they do, the entire fucking system of the country goes bust.
So it was My actually God. they quarantined like one flock of sheep. हम like कि तुम जिंदा रहो, बट ये जो तुमने सीखा है ये तुम किसी को बता नहीं सकते. Hidden knowledge. This is called curbing evolution. Yeah. Wow. And This This is is the meta. just This is some imagine meta if shit, humans के bro. साथ भी हम नहीं कर रहे. We are, Right? bro. most Like likely. the I to entire would question place is my like bet we are where doing it. knowledge comes from. I feel it's just randomness. Like I'm pretty sure वो sheep के दिमाग में कुछ वो सोचा नहीं रहेगा. उसने बस कर लिया होगा. किसी एक sheep ने कर लिया होगा. बाकी sheep ने तो सिर्फ देख के कॉपी किया उसको. अच्छा जनता, एक एक छोटा सा पॉइंट यार, मुझे हो रहा है माइग्रेन, तो अब मुझे ना दो दो सौरभ, दो दो धैर्य और दो दो चैतन्य दिखाई दे रहे हैं ब्रो. मुझे वो ऑराज रूह आ रहे हैं अफ़ज़ा पूरे की वजह अच्छे से ना। खासे. नहीं 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 भाई, वो रूह अफ़ज़ा की वजह से नहीं है, वो मैं बोल सकता हूँ. ठीक है, रामदान मुबारक, ठीक है, अभी अभी वो सब नहीं ब्रो, वो थोड़े टाइम बाद. बट इफ्तारी के ब्रो, बाद यू नो व्हाट दस आई एम इफ्तारी मिनट के में रैप वेटिंग बाद कर देते फॉर, यू नो व्हाट आई एम पांडे। वेटिंग दस फॉर. मिनट 10 मिनट में हाँ, रैप अप कर देते हैं। डन ओके डन नेक्स्ट। डन. बट ब्रो, व्हाट आई एम वेटिंग फॉर ब्रो, अभी वो इफ्तारी उफ्तारी की वो पार्टी की वो खबर नहीं आती पेज 7 पे कि सैफ अली खान ने कटरीना कैफ को नहीं बुलाया, शाहरुख खान को बुला दिया, इसने यहाँ पे टट्टी कर दी, साजिद खान ने ये कर दिया. ओ मुझे तो पढ़ना है ब्रो. दैट्स द काइंड ऑफ कंटेंट आई वांट टू फकिंग कंज्यूम. या एग्जैक्टली बिकॉज हम जितनी भी फिलोसफी पढ़ लें हमें सेलिब्रिटी थोड़ा लाइफ में जानना तो पड़ेगा गॉसिप यार. चाहिए. तो सबका एक ऑल्टरनेट अकाउंट रहता ही है. इंस्टा बॉलीवुड एक सेकंड. सेलेब्स. अरे भाई, उस पे तो कुछ भी चल रहा है ब्रो आजकल. कौन सा किधर? Bro, there's a subreddit called Insta Poly Celebs. ओके आई So डोंट नो। वहाँ पे जो तुम्हारा न्यूज़पेपर पे जो खबरें छपती है वो एक्चुअल सेलिब्रिटीज की छपती है. Okay, actual celebrities is also a spectrum, but हाँ वहाँ पे ओहो. वैसा छप. In that subreddit, it's mostly news of the Instagram celebs. ओके So their lives are even more crazier because they're even more raw and unfiltered. या 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 डू यू थिंक वी विल आल्सो गेट फीचर्ड आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स? हाँ ब्रो, मेरा तो मतलब if this keeps going on and मैं ज्यादा कंफर्टेबल हो गया तो बेल अमाउंट रेडी रखना. बेल अमाउंट वेलकम रेडी रखना. वेलकम टू टेक ब्रो भाई मेरा तो बेल अमाउंट है पंचायत। नहीं. ठीक है. ब्रो चैतन्य तो यूएई I'm में just है, gonna संजू माय. याद रखियो. That's what I'm तेरे saying. तेरे Bail amount is not दुआओं में possible. याद रखेंगे हम तुझे. Actually, you know what? I'll just train the GPT. तब तक तो हो जाएगा bro. Models where we'll just have like a fake version of Chaitanya still up and running. ब्रो किसी को आई थिंक पता वी ही नहीं शुड चलेगा ट्राई कि तू दैट मर गया. एक्सपेरिमेंट. किसी को पता? We'll just have a Chaitanya like this. हंस रहा है या डीप फेक. डीप फेक. हाँ हंस रहे हैं. एआई की बकचोदी कर रहे हैं. AI से ही जनरेट करवाएंगे. AI की बकचोदी सही है. बताओ. वही तो कर रहा था मैं. मेरे सीक्रेट मत खोल तू. अभी दूसरी टैब में वही चल रहा था. नहीं ये एक और था, मतलब लाइक समथिंग आई हैड ऑन माय माइंड ओके वाज कि लाइक सम मतलब ये जो बोला ना, मतलब धैर्य ने एक पॉइंट बोला था दैट, धैर्य या चैतन्य ने, वो न्यूरॉन फायर वाला जो हम लोग बोले. सो बेसिकली ना वो जो अभी रिसेंटली माय मॉम हैड अ सर्जरी ओके. तो दे शी वाज गिवन दिस, क्या बोलते हैं वो यार, वो बेहोश कर देते हैं ना, Anesthesia. एनेस्थेटिक. हाँ एनेस्थीसिया. Anesthesia. तो या दे रियली डोंट नो हाउ एनेस्थीसिया वर्क्स. Okay, like they fucking Yeah. like people don't know till today how anesthesia works on the brain. It was discovered by accident, and it is the only way that you can perform a surgery on human and save their life. Like, and this feels so alien, you know. Like, I read this book called Dark Matter. Okay, and like I was seeing some show which was of multiverse, okay, where from future some people came and gave the technology, and they used to use the present world as the lab.
ओहो, ठीक है Okay. बकचोदी बेंचो। Yeah. They use. Sam Altman is an agent Yeah. from the future. So, like when, like like these hypotheses, these TV series come, these stories come. Okay, and I'm like, fuck, bro. No wonder, right? And you are surprised how penicillin were discovered. Antibiotics. अरे तो मैं Bro, मेरा तो स्ट्रॉन्ग थियरी है ब्रो, एवरीथिंग इज जस्ट रैंडम. हाँ रैंडम मतलब धैर्य इवन दैट रैंडम इज लाइक कुछ तो एंड होगा ना उसका एंड सोर्स. रैंडमनेस को जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया है, भगवान इन्वेंट किया है, केओस थ्योरी। Yeah. हाँ साइंस इन्वेंट किया है, भगवान इन्वेंट रेसिज्म Bro, इन्वेंट साइंस किया है, धैर्य सब भाई कुछ कर डायरेक्टली रहे हैं चला भाई गया, तो. भगवान इन्वेंट किया है। देखो पता भी कितने लोगों को इन्वेंट किया तूने ये nice. स्टेटमेंट. हमने ऑफेंड होना भी इन्वेंट किया है. तुमको लगता है ब्रो ऐसा वो कुत्ते ऑफेंस लेते हैं एक दूसरे की बात पर? नो राइट, नहीं, हमेशा हंसते लेते खेलते हैं. रहते हैं. हंसते It's like खेलते somewhere down भाई the line इसको evolution देखा में है, we इसको discovered, we invented taking offense, right? कुत्तों को छोड़ो, I am pretty sure single celled amoebas don't take offense. Oh, fuck. पॉडकास्ट का नेम अमीबा yeah, I पॉडकास्ट नहीं can't होना argue with चाहिए. that. Not getting it. Don't take offense. Bro, I don't want to get cancelled by अब धैर्य amoebas, भाई bro. ट्रेस बैक करेगा पता अपनी चला कोई जर्नी फेक फ्रॉम अकाउंट व्हेन बना ही रहा वाज है. अ स्पर्म। क्योंकि उस वक्त तो मैं ऑफेंस नहीं लेता था। In that case, I'm still a sperm क्योंकि मैं अभी भी नहीं लेता. Oh. वो काफी बड़ा हो गया नहीं, काला भी हो गया. How the fuck is this not offensive? And whatever I said was offensive. How the fuck? Bro, because we can prove a color. Oh god, damn. This went wild. Very fast. Very fast. थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया. Oh god. ये पार्ट भी कट करेंगे. रमजान चल रहा है ब्रो, कट करो। Oh my God. No, I was asking Chaitanya, what's the dating? How's the dating life in Dubai? Bye. And like I told Saurav, I don't have enough credentials कुछ to भी talk मतलब about जितना भी anything जानता है dating. ना उतना बोल. And he got to a very interesting point, and I was like, we need to record this in our podcast. We need to put this in our podcast. So just क्या talk था भाई about बता? it. हाँ बता बता. So essentially, the नहीं point नहीं that नहीं नहीं Saurav is स्टार्टिंग से talking बोल about जैसे is मैं मुझे हाँ मुझे बोलना होगा starting से. वैसे ठीक बोल. है, ठीक है. तो यहाँ पे because like most things in Dubai, dating is also a mix of west and east. ठीक है. तो ईस्ट में जो शोना बाबू की बकचोदी होती है वो थोड़ी कम है बिकॉज वेस्ट का धैर्य इन्फ्लुएंस है नहीं यहाँ जानता है ना ये सब. पे, बट है, अभी भी है. धैर्य ये सब नहीं हाँ, जानता है. एनीवे तो हाँ, तो बाबू सोना थोड़ा कम है यहाँ पे, बट है. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है, तो उससे थोड़ा एक मतलब मेरे सर्कल में जितना मैं जानता हूँ एक लेवल ऑफ शुगर डैडी शुगर मम्मी काइंड ऑफ चल रहा है, लेकिन नॉट एट दैट लेवल. सो आई कॉल इट सेमी शुगर डैडी. ठीक है. तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सेमी शुगर डैडीज वेयर दे आर नॉट 60 years old, but they're not like multi-millionaires also. Sweet मतलब So they're like मतलब वो around दोनों 30, 40s. हाँ दोनों में वो बीच में है। Sweet spot. दोनों के बीच में. एग्जैक्टली. तो मतलब प्रो क्या है तुम्हारा पैसा और कौन क्या है तुम्हारी उम्र, दोनों कम कर दिया तो अभी भी आरओआई उतना ही है. Why how Right. is this तो different? हाँ, Okay. Why are we talking about this? नहीं How is मतलब this related to AI? मेरे को Bro, क्या मालूम Saurabh- यार. सौरभ को Saurabh doesn't पूछो. have experience. Podcast Sugar उसका daddies है. is what I'm seeing. अरे भाई ये एकदम से आ गया ना, मुझे समझ ही में नहीं आया कि मतलब ये कहाँ से कहाँ आ गया. मतलब सोना बाबू ये सब से और डायरेक्ट इस पे आया. एंड आई वाज लाइक ये आधा क्या होता है मतलब
ये पूरा कब होता है और आधा कब होता है, कब होता नहीं है, क्या है मतलब? यार मतलब लेकिन I still have a very big doubt. So you're saying Dubai में they have taken the best parts about dating from the west and the best parts from the east, or have they taken नहीं, the मैंने worst बोला parts? दोनों नहीं, इन्फ्लुएंस है। बेस्ट वर्स्ट अच्छा, मैं क्लासिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। इन्फ्लुएंस या दोनों भाई तरफ है। स्पेक्ट्रम पे है। हम्म, हाँ, परफेक्ट, या स्पेक्ट्रम पे है। या जैसे मैं और पांडे I स्पेक्ट्रम तो पे। have diet autism, I'm not even kidding. सेम, हम लोग मैथ पे माइक्रोडोज चलो करते चलो गाइस, वी आर हैं। ज्यादा हो गया अभी, सौरभ को भी लग रहा है ज्यादा हो अब ये गया। अभी एडिट अब तो करूंगा नहीं मैं। वी आर ये देख, उसकी नाक सफेद हो अब गई। 1 बजने वाला है, 1 बजने का रात हो रहा है अब। Okay, let's wrap this up. चल, Thank you guys. See you in the next one. Any closing words, Daria? हाँ How did you feel? यार, आई जस्ट वांट टू से हमने जितनी भी बकचोदी करी थी ना, लाइक जस्ट चैतन्य बोल रहा था कि एट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर इस भाई पॉडकास्ट का भी attribution सेम चीज, नहीं। इट शुड लाइक वैल्यूज वर्क द सेम वे फॉर एवरीवन। या और तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो हम धैर्य को प्रॉपर्ली एट्रीब्यूट करेंगे, उसका सब इंस्टा यूट्यूब सब हैंडल टैग LinkedIन करेंगे। LinkedIn डाल देंगे bro. Don't worry. लिंक्डइन, बम्बल, अच्छा, टिंडर। बम्बल Done. बम्बल टिंडर भाई की Links प्रायोरिटीज भेज दे. देख रहे हो। I'm not kidding. Description में रहेगा. Guys, find it in the description. Done. कौन से गाइस, किससे बात कर रहे हैं तू? वही मैं सोच रहा ही हूँ इज टॉकिंग टू दी ओपन पिछले एआई गाइस, जो पिछले इसको वीडियो स्क्रैप करके इसका कुछ करने वाले हैं। 42 व्यूज आए थे अभी पिछले कुछ वीडियो 50-60 में आ कुल गया है मिला bro. के। ओ हाफ सेंचुरी अरे मार ब्रो, दी चिंता guys। मत कर, मैं रोज खोल के देखूंगा यही सेम वीडियो है सब। तो एक ही व्यू काउंट होता है. नहीं नहीं, अलग अलग होता है। Okay. नहीं, अलग अलग काउंट होता है। मुझे ये मजा जानना आया है, Daria? एनीवे तुम बट लोग को ये क्यों पता है कि एक ही काउंट होता है? तुम लोग साइड पार्ट टाइम क्या कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, मुझे ये बताओ। मेरा मुझे क्लिक फार्म लग है रहा भाई। था। You जो know, मैं इसी घर से मेरा मम्मी को ना व्हाट्सएप पे एक स्पैम मैसेज आया कि आप ये लिस्ट ऑफ वीडियोस आप हर दिन जाकर व्यू करो, लाइक करो, और हम इतने रुपए महीने को देंगे. भाई I was मेरे like, पास सेम मैसेज आया है। आर यू सीरियस? हाँ. हाँ ब्रो, पांडे, करके देख। क्या पांडे सौरभ की आर मम्मी दे है? फाइंड आउट इन आउटसोर्सिंग द क्लिक नेक्स्ट फॉर? एपिसोड। Okay, we've reached the हो peak गया. now. Now we have to end it. Oh man. अरे ब्रो, आई एम तो सेइंग लेट्स इनवाइट अ प्रीवियसली फेमस टेक लीड टू दिस कॉन्वर्सेशन। भाई क्या हो रहा है? That's all. Pandey, धीरे any जा रहा parting है। words? We are wrapping this up. Maybe we'll see you guys again next week. Okay. मे बी नॉट And this was ब्रो, a मे बी fun बेल one. पे निकालना पड़ेगा हम लोग को, यू नेवर नो नहीं, वैसे ब्रो। सब एंड नहीं ऑल्सो होगा. चैतन्य, लाइक माई ओनली क्लोजिंग रिमार्क इज ब्रो, क्लिक फार्म्स आर नॉट कॉल्ड क्लिक फार्म्स इन इंडिया, दे कॉल्ड क्लिक तबेलाज। हाउ डेयर यू? Why am I the only one laughing? It's true bro, मतलब it's not a देखो joke। ये guys, ये चलता रह कम टैक्स जाएगा. भरना पड़ता है, पता है तबेला को। एग्जैक्टली। Okay. Bro, I think I just laugh at I anything non- at we this are point. doing मेरे better. को घटिया से इट्स घटिया अ नॉन चीज बोलो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, समझा करो। आई थिंक दैट वाज अ लिटिल स्ट्रेच ऑफ अ जोक। stopping the मेरे को recording. सुनना ही नहीं है अभी, मैं Stopping सुन the ही नहीं recording. रहा। At this point, मैंने I'm just निकाल glad दिया, we मेरे को नहीं stopped सुननी है recording a long time ago। No, we didn't. जो। No, क्या बोल रहा है भाई? ब्रो मुझे I'm लाठी stopping चार्ज now. हो जाएगा मेरे ऊपर, ऐसे मत कर सौरभ। I'm stopping now. ठीक है. See you guys next week. चलो, Thank see you. you. Bye bye. Stopping the recording.